हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड इज वेरी वेरी पॉजिटिव एंड preparing well for the exams. So, those who are new to the channel, I would like you all to have a brief introduction about the channel. This is an educational channel wherein we talk about mathematics, especially for the grades from grade 6 to 10. As of now, ग्रेजुअली हम लोग 11th के 12th के टॉपिक्स भी कवर अप करेंगे। तो within 6 months the focus is to complete the entire topic from 6 to 10 as of now. And then those friends of mine who are preparing for PGT computer science, TGT computer science, so a separate playlist has been dedicated for that sole purpose की पूरा जो हमारा 11th है 12th का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बहुत सारे चैप्टर्स हो भी गए हैं and we are moving ahead to complete the syllabus on time. So that is the main thing. And the other candidates and friends of mine who are preparing for the competitive exams, and then computer is a mandatory section. Those who are not from the background, they feel that okay, how do we deal with this particular section? So no worries, a separate playlist है, वहां पे देखिए। अगर आपको हिंदी में चाहिए, हिंदी में भी एक पूरा सेशन डेडिकेटेड है। बहुत सारे सेशंस हिंदी में हैं। जिनको इंग्लिश में कंफर्टेबल है, बहुत सारे इंग्लिश वाले सेशंस हैं। So definitely go and check it out. And I assure that if you are going through those particular sessions, then definitely you will be getting full marks on that particular section. तो ये है अभी तक की जानकारी। तो अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी, तुरंत कर लीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मोटिवेट कीजिए so that I can come up with more interesting sessions. And if you are having any doubt, if you want a particular topic, I got some comments from children of grade 6 also. They wanted linear equations in one variable to be discussed. So I have already created 2 sessions on the same. मैंने सब जो हमारा बैलेंसिंग मेथड होता है, ट्रांसपोजिशन मेथड होता है, उसमें ऑलरेडी बना दिए हैं। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड हाउ डू वी सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। कैसे आते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, हम इक्वेशंस कैसे बनाएं, ये सब आज हम सीखने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। एंड दिस चैनल, this particular session is not only useful for those children of 6, 7, 8 who are having linear equations in one variable, but also those who are appearing for competitive exams और वहां पे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चंस डेफिनेटली उसमें पूछे जाते हैं कि द एज ऑफ रोनित इज 4 times द एज ऑफ ये, तो 5 साल बाद क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप भी जरूर देखिए और अपने फ्रेंड से लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना भूले मत। So let us get started without wasting much time now. So here we go. So I hope that you all remember what we have done so far in this particular section. So let us go ahead and let us solve some questions. So based on linear equations in one variable, do you remember linear equations in one variable क्यों बोला जाता है? क्योंकि 3 conditions को meet करना है। एक तो equality sign should be there, there has to be only one variable, और जो भी variable है उसका exponent 1 होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस थे। अब एक क्वेश्चन देती हूँ एज रिलेटेड। नाउ द क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ द present age of father and son is 4:1. If 20 years later क्या होता है? The ratio becomes 2:1. Yes. So find the ratio. Now the question says find the ratio before 5 years. चलिए before 5 years. तो अब क्वेश्चन लग रहा है कि अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो इसमें इतना सोचना नहीं है, सीधे करने लग जाना है। ओके, so here we go. So what is it given? What is the question given? The ratio of the present age of father and son. तो रेशियो दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर कि जो फादर हैं उनका एज हम लोग करते हैं 4x। ठीक है, क्योंकि रेशियो 4:1 दिया है, तो हमने
फादर का एज 4x कंसिडर किया और सन का एज हमने 1x, 1x मींस x ओनली। ठीक है, लेट अस कंसिडर फादर्स एज इज 4x एंड सन्स एज इज x. If 20 years later, 20 साल के बाद, okay, so we are talking after 20 years, okay, so after 20 years क्या होगा, अब हमारे अकॉर्डिंग जो हमने लेट करके अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फादर का एज 4x प्लस 20 और सन का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 20. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ 20 years later the ratio become, मतलब कौन सा रेशियो, फादर और सन का रेशियो. तो फादर का 4x प्लस 20 एज हो गया, सन का रेशियो x प्लस 20 हो गया और उनका रेशियो 2/1 है. अब डू यू रिमेम्बर व्हेन वी वर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल इन द लास्ट क्लास, अगर ऐसे फॉर्म में आ गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो क्या किया जाए, व्हाट शुड वी डू, क्रॉस मल्टीप्लाई टू हैव इट इन द सिंपल फॉर्म. तो हमने ये क्या किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो वी आर हैविंग 4x प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 1, डेफिनेटली इट इज द सेम. सो 4x प्लस 20 यहाँ आ गया, फिर इज इक्वल टू 2 into x plus 20. 2 multiplied by x plus 20. So we will be having 4x plus 20 and then we will be having 2 into x, that is 2x, plus 2 into 20, that is 40. So we will be having 4x. अब 2x को हमको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाना है, तो ये हो जाएगा 4x minus 2x और ये हो जाएगा 40 minus 20. So we will be having 4x minus 2x, यहाँ पे लिख लो. So here continues, 4x minus 2x is 2x, 2x is 20, x is equal to 10. तो हमारा सन का एज कितना है, x कितना आया हमारा 10, तो सन का एज तो 10 years हो गया एंड फादर का एज कितना हो गया, 4 into 10, that is 40 years. So we have got the answer. Now read the question once again. उन्होंने ये नहीं बोला है कि फादर का एज कितना आया, सन का एज, ये तो पूछा ही नहीं है. उन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो बिफोर 5 years. अब बिफोर 5 years के लिए हम क्या करेंगे, सी बिफोर 5 years फादर का एज कितना होगा 35 एंड बिफोर 5 years सन का एज कितना होगा 5. तो अब इन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, 35/5, 5 1 5, 5 7 35, 7 is to 1. 7 is to 1 is the ratio. So that is the answer. How do you feel? Confident now? So हमने कहाँ से शुरू किया, that the ratio of the present age of father and son. तो जो भी रेशियो दिया है उसको x के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया, 4x and x. 20 years later means 4x plus 20 divided by x plus 20 and the ratio becomes 2:1. So just do the cross multiplication and you get the answer. Does it make sense? We got the value of x, we got the value of father's age and son's age, and then we find out the ratio before 5 years, and that is a piece of cake for you all, I hope. Yes, so let us go ahead with a similar type of question that will boost up your confidence. Fine. So here we go. So are you all ready? So I want you all to try, okay? When I am completing the question, तो आप लोग try करो. So what is the question? The numerator of a fraction. एक fraction है, do you know? जो ऊपर की तरफ होता है उसको numerator बोलते हैं. The numerator of the fraction is 5 less than the denominator. Okay. If 3 is subtracted from denominator, okay, 3 subtracted from the denominator, the ratio becomes 2:3. Becomes 2:3. So we need to find the original form. What is the original form of the fraction? Original fraction we need to find out. Okay, so that is again a easy one. So let us see who is ready with the answer. Come on, not with the answer, at least with the equation. So we need to express it in the form of an equation first. The numerator of a fraction is 5 less than the denominator. तो अगर मेरा डिनोमिनेटर x है, मैंने बोल दिया डिनोमिनेटर x है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होगा 5 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से 5 कम है. इट इज 5 लेस. सो कैन आई राइट इट एज x minus 5 by x.
If the denominator is x, the numerator is 5 less than the denominator, x minus 5. If 3 is subtracted from the denominator, अब इन्होंने बोला ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है और ये हमारा x माइनस 5 है, डिनोमिनेटर अभी हमारा x है. अगर मैंने डिनोमिनेटर से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो जो रेशियो है वो बन जाएगा 2:3. I think our work is done. So let us find the value of x now. Cross multiply, जल्दी जल्दी cross multiply कर लीजिए. And those who have got the answer, do comment in the chat box. मेरे से पहले जिसको आंसर आ गया तुरंत मैसेज कर देना. 3x minus 5, 2 into x minus 3. So 3 into x, 3x, 3 into 5, 3 5s are 15, 2 into x minus 2 3s are 6. So we will be having 3x minus 2x is equal to minus 6. Minus 15 जब इधर आएंगे तो इनको पॉजिटिव कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाइए. तो आप अपने लाइफ में भी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाइए. तो क्वेश्चन में यही है, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया मगर इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव हो रहा है. सो दैट यू शुड नॉट अप्लाई इन योर लाइफ. ओके, ओनली बीइंग नेगेटिव, going from the negative zone to the positive is a better idea. What do you all say? 3x minus 2x, that is x, minus plus, again dear children of grade 6, specifically I am telling you all, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस. तो हम माइनस करेंगे, 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, टेल मी, कम ऑन क्विकली. 9 and 10 11 12 13 14. okay, so we are having 9 as the answer. तो मैं माइनस 9 करूंगी या प्लस 9? it will be plus 9 because जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ सिंबल क्या है उसके आगे, पॉजिटिव. so if x is 9, so what will be the original fraction? original fraction तो ये है, so that is 9 minus 5 by 9. so 9 minus 5 कितना है, 4 by 9. so ये हमारा आंसर हो जाएगा. what do you say? easy peasy lemon squeezy or not? easy peasy lemon squeezy. so are you confident, feeling confident or not? do अभी तुरंत कमेंट कर देना, otherwise you will forget after the session is over. So I think that brings a clarity. Now I want to give you all another question. Again we go with the next question, and here we are. That is again an easy one, don't worry. Okay, so the question says, question number 3, the length of the legs of an isosceles triangle is 4 meters more than its base. If its perimeter is 44 meters, find the length of the sides of the triangle. Now what do you do, children? So what do you do? What is the idea? What is the logic? Come on. Yes, tell me. Just hold on. I will try. Tell me, what will be the answer? Okay, so we are having a triangle, and in the triangle, what is it given? The length of the legs of an isosceles triangle. In isosceles triangle, we know that the two sides are the adjacent. I will just make a triangle and then I will show you. Just hold on. So I want to make a triangle for you all, and okay, here I am having a triangle. Okay, so okay, now what is it given in the question? Like we are having a triangle, and here, okay, then we are having this triangle, and then okay, this is the triangle. So that is the triangle we are having, and it is an isosceles triangle. And what does it do? What does it do, children? Tell me. Okay, now here is the triangle. Now the length of the legs of the isosceles triangle is 4 meters more than its base. अगर base x है
तो जो ये अब हमको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये और ये इक्वल होगा, तो वो लोग बोल रहे हैं जो लेग्स है आइसोसेलेस ट्राइंगल का 4 मीटर मोर देन द बेस, अगर बेस x मीटर है तो ये भी x+4 होगा और ये भी x+4 होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली वो साइड्स इक्वल होंगे। सो नाउ व्हाट इज इट गिवन इफ द पेरीमीटर, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेरीमीटर, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री को हम एड अप कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। इफ इट्स पेरीमीटर मींस x+4 plus x+4 plus x is given as 44 meter. So now find the length of all the sides of the triangle. Very easy. X plus x plus x कितना हो जाएगा 3x. X plus x plus x is 3x. And then let us add the numbers. 4 plus 4 that is 8 is equal to 44. Now just solve the linear equation. 3x is equal to 44 minus 8 and yes, 9, 10, 11, 12, 13, 14, that is 36 we will be getting. So x is equal to 3 1 is 3, 3 2 is 6. तो हमारा x आ गया 12 मीटर, तो बेस तो हो गया 12 मीटर और जो ये लेग्स हैं वो कितने हो जाएंगे 12 plus 4 that is 16 meter and this is also 16 meters. So these are the dimensions of the triangle. So that is the answer. Does it bring a clarity to you all? I hope it's clear. Yes. So yes, that is the third question we did. Now let us move ahead and let me give you another question that is again a very easy peasy one. So here we go. Yes, are you all ready? So come on, solve the question and tell the question difference, the answer. Okay, before I solve it for you all, the difference between the two numbers, is 48. Yes, and the ratio is given as the ratio of the two numbers. The ratio of the two numbers is 7:3. So what are the two numbers? The question is very easy peasy. What are those two magic numbers? Come on, children. What will be the answer? What do you all think? Come on. ये तो बहुत easy है. So some of you have got the answers. The difference between two numbers is 48. ठीक है. The ratio दे रखा है तो एक नंबर को 7x ले लेते हैं और दूसरे नंबर को 3x ले लेते हैं. What do you say? जैसे हमने पहले एज वाले क्वेश्चन में किया था. और इन दोनों का जो डिफरेंस है 7x minus 3x का डिफरेंस दे रखा है 48. So 7x minus 3x 3 4 5 6 7 4x is equal to 48. And then x is 4 1 4 4 2 8. तो x की वैल्यू आ गई 12. तो what will be the numbers? 7 into x, 7 into 12 and 3 into 12. 84 and 12 24 to 36. So these are those two magic numbers. Did you get the same answers? So if you got the same answer, give me a, what do you all say? Like. Yes. So that is the question. That was again a very easy and peasy. So one more question related to age. What do you all say? Or are you all tired by now? So don't be tired. Let us solve one more question. Yes. That is an easy peasy one. Yes. So okay, we are here. We are having question number 5. Aaron is 5 years younger than Ron. Okay, 5 years younger. So it should be like when I'm writing the sentence younger than Ron. So you should be able to frame the equations like right now only. कि ऐसे लिखा है तो Ron को अगर मैंने x ले लिया तो Aaron को मैं x minus 5 ले सकता हूँ. तो जैसे एक लाइन पढ़ा वैसे दिमाग में equations form करना शुरू हो जाना चाहिए. Okay. Now 4 years later, Ron will be twice as old as Aaron. Now they are asking to find the present age. Fine. अब करते हैं हम इसको solve. What do you say? Are you all ready? Ready? Yes. Okay, here we go with the solution. Okay, I think I should take blue color. So Aaron is 5 years younger than Ron. तो ठीक है, अगर मैंने Ron को बोल दिया कि Ron x साल के हो तो Aaron हो जाएगा हमारा 5 years younger, है ना. एल्डर होता तो x plus 5 कर देते, यंगर है तो x minus 5 कर दिया.
4 years later, अब 4 years later के बारे में पहले जब बात हो रही है तो हम पहले एक चीज जरूर कर लेंगे। 4 years later में मतलब रॉन की एज हमारा x+4 हो जाएगा, और एरॉन की जो एज है हमारी 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x-5 + 4। डोंट फॉरगेट दिस, ओके, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे फॉरगेट दिस। सो x माइनस माइनस प्लस माइनस x-1। अब रिलेशन पढ़ना। 4 years लेटर तो हमने बोल दिया रॉन x+4 हो गया, एरॉन x-1 हो गया। तो अब रिलेशन बनाते हैं, रॉन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज एरॉन। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाते हैं कि रॉन 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज एरॉन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, x+4, 2 into x, 2x, minus 2 into -1, -2, so we will be having x, ये -2x वहां भेज देते हैं, -2, +4 becomes -4 here, x minus 2x minus x आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 6। मतलब रॉन तो 6 ईयर का है, yes, and Aaron is 6 minus 1, that is 6 minus 5, that is 1. Yes, so that is the present age of Ron and Aaron. Is it fine? So don't get tense कि अरे word problem आ गया, equation कैसे बनेगा? As and when you keep on solving the questions, it will give you a better clarity. अब ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए, perimeter of the triangle क्या है, perimeter of the rectangle क्या है, क्योंकि question में आ गया कि perimeter क्या है। So we should know that perimeter means that we are adding up the sum of the length of the boundary. Yes, because they are not giving you the formula कि perimeter ये होता है, अब ये लगा लेना. So the basic things like when we are talking about the fraction, numerator मतलब ऊपर का arrow जो हमारा upper portion है, that is the numerator, and then the denominator. When we talk about the ratios, the upper part, the first 3:5 बोल रहे हैं, तो 3 is the antecedent and the 5 is the consequence. So these basic terminologies you should remember and you are good to go. So I think let us wind up the session today. If you want more questions to be solved, type in the questions on the chat box. I am here to just help you out in all these questions. Yes, so let's hope we meet again soon with lots of interesting questions. Make sure you are liking, sharing, and subscribing to the channel, and also clicking on the bell notification so that as and when the video is uploaded, you are notified about it and you just definitely watch it out. So have a great day. Bye bye everyone. God bless you all. Thank you.